Hello everyone. So today we will cover passive forms. I know you all guys find it really so tough and confusing, but now we are going to make it very easy. Okay, how? Let me tell you. So actually, why do we use passive voice? Firstly, let me tell you, we use informal and formal ways, passive voice. And these are not so useful as we use actively active form, but passive voices are really unskippable. Means we cannot make do without it. हम अपना काम नहीं चला सकते इसके बिना पैसिव वॉइस के बिना विदाउट पैसिव वॉइस वी कैन नॉट मेक डू वी कैन नॉट स्पीक द सेंटेंस व्हेन इट नीड्स फॉर एग्जांपल. This is a very informal example. If you are going to a shop where cars are being repaired, cars repair की जा रही हैं, जहाँ पर cars are being repaired, कार रिपेयर की जा रही हैं, वहाँ आप जाते हो. अच्छा, कार रिपेयर की जा रही हैं, cars are being repaired there, you are that shop. Okay, so की जा रही हैं, here we are not focusing the person who is repairing the car. This is also a kind of passive form. Okay, so if you go to that shop वेयर मोबाइल्स आर बीइंग रिपेयर्ड, मोबाइल रिपेयर करे जा रहे हैं, जहाँ पर आप उस शॉप में जाते हो करे जा रहे हैं, नॉर्मली हम वही बोलते हैं. वहाँ पर कोई मोबाइल रिपेयर कर रहा है, हम ऐसा कभी नहीं बोलते. वी नेवर से कि समवन इज रिपेयरिंग द, नो. एंड यू कैन नेवर फाइंड एनी वेयर रिटर्न कि आई रिपेयर द मोबाइल, आई रिपेयर द कार्स. नो, कार्स आर रिपेयर्ड हियर, मोबाइल्स आर रिपेयर्ड हियर. इन हिंदी यू विल फाइंड यहाँ मोबाइल रिपेयर किए जाते हैं, यहाँ कार रिपेयर की जाती है. कभी भी आपने ये लिखा हुआ नहीं देखा होगा ओके कि यहाँ पर मैं कार रिपेयर करता हूँ. तो यहाँ पर पैसिव फॉर्म बहुत ज़रूरी है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. अच्छा, दूसरी सिचुएशन लेते हैं. हम फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में भी पैसिव वॉइस का पूरी तरह से यूज़ करते हैं. वी यूज़ इट विथ फुल पोटेंशियल फॉर इन वेरी फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट. फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट इन द सेंस कि ज़्यादातर इट साउंड्स अ वेरी फॉर्मल एंड ऑफिशियल इफ़ यू यूज़ पैसिव फॉर्म. रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय टुमारो. कल तक रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे. सो किए जाएंगे. एंड इफ आई से हियर आई विल डिक्लेयर द रिजल्ट बाय टुमारो, नो, it won't sound good. So result will be declared by tomorrow. You will be informed by tomorrow. This sounds more professional. So you'll be informed by tomorrow. Okay, we speak like this. Or receipt will be sent to you by tomorrow. You are being promoted. You are being promoted. Here is a boss and he is saying you are being promoted. He cannot say like I'm promoting you. Have you ever seen a person saying this? No. So your fee has been received. If I say you like you have submitted your fee, so I received your fee, it sounds like I was ready to collect your fee, right? It sounds a bit really different and odd and also unprofessional. So it would be good option if I say your fee has been received. Okay, it sounds like good. You'll be allowed to participate. You'll be allowed. आपको allow किया जाएगा. You'll be allowed to participate. So these are few examples and you can easily observe using person this kind of sentences. This is called passive voice. Okay, so now we are going to learn few more example of passive voice by observing only. You have to try and we will continue this session next part if you like it. So now we are going to cover would like to in passive form. If you haven't heard or haven't learned would like to, so you can check my previous videos in 5 minutes learning day part 1 and 2 and day 3, day 1, day 2 and day 3. You have to watch that session, those sessions, and please learn firstly I would like to using. Then coming to this session because this is the passive form of that. Okay, क्या आप चाहोगे आपको बॉदर किया जाए? क्या आप चाहोगे कि आपको परेशान किया जाए? वुड यू लाइक टू बी बॉदर्ड? वुड यू लाइक टू बी बॉदर्ड? अगर आपको बोलना है कि आप चाहोगे कि आपको परेशान किया जाए, वुड यू लाइक टू बी बॉदर्ड? वुड यू लाइक टू बी इंसल्टेड? क्या आप चाहोगे कि आपकी इंसल्ट की जाए? वुड यू लाइक टू बी इंसल्टेड? कोई भी नहीं चाहेगा कि बिना बात के उसकी इंसल्ट की जाए. कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कोशिश करें. कोई भी नहीं चाहेगा कि बिना बात के उसकी इंसल्ट की जाए. Okay, I'm telling you the answer. No one would like to be insulted for no reason. No one would like to be insulted for no reason. Okay, would you like to be motivated? क्या आप चाहोगे आपको मोटिवेट किया जाए? Would you like to be honored? क्या आप चाहोगे आपको सम्मान किया जाए? Would you like to be honored? Okay, would you like to be cheated? क्या आप चाहोगे कि आपको चीट किया जाए? Okay, next one. क्या आप नहीं चाहोगे कि उसे उसकी गलती की सज़ा दिलवाई जाए? क्या आप नहीं चाहोगे कि उसे उसकी गलती की सज़ा दिलवाई जाए? कोशिश करें. स्ट्रेच योर माइंड. Okay. Wouldn't you like him to be punished for his crime? Wouldn't you like him to be punished for his crime? It was the answer. Next one.
दिस इज योर टास्क एक्चुअली. वुड यू लाइक टू बी एट समथिंग? एंड कोई भी नहीं चाहेगा कि उसे सबके सामने शर्मिंदा किया जाए. यू हैव टू ट्राई टू ट्रांसलेट बाय योर सेल्फ दिस सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट वन. नाउ वी आर गोइंग टू कवर एक्शन पार्ट यूजिंग वुड लाइक टू. क्या आप चाहोगे कि आपका काम किसी और के द्वारा किया जाए? क्या आप चाहोगे कि आपका काम किसी और के द्वारा किया जाए? कैसे बोलेंगे? Try to stretch your mind and get the answer by yourself. If you cannot, so let me add. Would you like your work to be done by others? Would you like your work to be done by others? Would you like to, okay, would you like your work to be done by others? Speak like this. क्या आप चाहोगे कि आपको किसी और का नाम और के नाम से बुलाया जाए? क्या आप चाहोगे कि आपको किसी और के नाम से बुलाया जाए? Would you like to be called by another name? Would you like to be called by another name? क्या आप चाहोगे कि आपके वर्क के लिए किसी और को क्रेडिट दिया जाए? क्या आप चाहोगे कि आपके वर्क के लिए किसी और को क्रेडिट दिया जाए? Would you like someone else to be credited for your work? Would you like someone else to be credited for your work? नेक्स्ट वन. क्या आप चाहोगे कि इस काम के लिए आपके डैड को क्रेडिट दिया जाए? क्या आप चाहोगे कि इस काम के लिए आपके डैड को क्रेडिट दिया जाए? कैसे बोलेंगे? Would you like your dad to be credited for this work? Would you like your dad to be credited for this work? मैं चाहूँगा कि मेरे काम का भी क्रेडिट मेरे डैड को दिया जाए. नाउ ट्राई टू ट्रांसलेट. दिस इज अ सिंपल वन. दिस इज नॉट क्वेश्चन फॉर्म. मैं चाहूँगा या मैं चाहूँगी कि मेरे काम का क्रेडिट भी मेरे डैड को दिया जाए. आई वुड लाइक माई डैड टू बी क्रेडिटेड इवन फॉर माई वर्क. आई वुड लाइक माई डैड टू बी क्रेडिटेड इवन फॉर माई वर्क. ओके. मैं चाहूँगा कि आपके द्वारा चीफ गेस्ट को सम्मानित किया जाए. मैं चाहूँगा कि आपके द्वारा चीफ गेस्ट को सम्मानित किया जाए. कैसे बोलेंगे? ट्राई टू स्ट्रेच योर माइंड. I would like the chief guest to be honored by you. I would like the chief guest to be honored by you. यहाँ पर हम पैसिव फॉर्म की एक और भी चीज़ नोटिसेबल है, नोटिस करने लायक है कि यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं ना उसको ज़्यादा फोकस नहीं करते, काम पर फोकस करते. आई वुड लाइक द चीफ गेस्ट टू बी ऑनर्ड बाय यू. बाय यू लास्ट में ऐड करते. हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप बाय यू ऐड करो. बाय यू हम जब नीड होगी तो ही यूज़ करेंगे. ओके. आप क्यों चाहोगे कि मेरे द्वारा चीफ गेस्ट का सम्मान किया जाए? Why would you like me to honor the chief guest? Also, you can say, why would you like the chief guest to be honored by me? Okay. अच्छा, confirmation form करते हैं. Let's do confirmation form. Confirmation form means you are trying to confirm the thing. You are not confirmed. Okay. So क्या आप नहीं चाहोगे कि आपके काम की सराहना की जाए? क्या आप नहीं चाहोगे कि आपके काम की तारीफ की जाए? Wouldn't you like to be appreciated for your work? नेक्स्ट वन. क्या आप नहीं चाहोगे कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए? हाउ टू से? वुडंट यू लाइक एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट हिम? वुडंट यू लाइक एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट हिम? ओके. सो दिस इज नाउ योर टास्क. आप नहीं चाहोगे कि उसे उसकी गलती का एहसास कराया जाए. हाउ टू से? आप नहीं चाहोगे कि उसे उसकी गलती का एहसास कराया जाए. दिस इज टास्क फॉर यू. Please do this sentence and stretch your mind. Try to find the answer by yourself only. Don't search through Google. Okay. We will continue this passive session. Okay. Thank you. Bye.